दो मिनट वेट करते हैं इफ समवन जॉइंस अदरवाइज विल बिगिन. Okay. Okay, I guess we can start. Give me a minute. I will share my screen very quickly. Okay, so we'll also talk about props sharing. ठीक है, prop sharing के बारे में बात करते हैं. Then we'll move to why we need redux. Okay, for this, let me create a Jamboard. अच्छा, so this is a React app. ठीक है, ये एक React app है. नाउ आई सेड दैट कि डिफरेंट कंपोनेंट्स की हेल्प से हम अपने एप्लीकेशन को फ्रेम करते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में मतलब फंक्शन भी हो सकते हैं और क्लासेस भी हो सकते हैं. अगर मैं सिंपल किसी ई कॉमर्स साइट की बात करूँ तो वी हैव समथिंग एज नेविगेशन बार, जो हमारा टॉप पे नेविगेशन बार होगा. फिर हमारी प्रोडक्ट लिस्ट होगी, मेन में प्रोडक्ट लिस्ट होगी. इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्ट होगी और इन द बॉटम वी हैव लेट्स से कॉन्टैक्ट सेक्शन. कॉन्टैक्ट सेक्शन है हमारा. इस नैव बार में प्रोफाइल सेटिंग्स वगैरह होंगी, इनका एक कंपोनेंट होगा. इसके अलावा इसमें नेविगेशन बार में ही हो सकता है सर्च बार भी हो, मोस्टली सर्च बार भी होता है. ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट होती है, इसके अंदर डिटेल्ड प्रोडक्ट लिस्ट होती हैं. ठीक है, ऑल्सो नैव बार ऑल्सो हैव द चेकआउट लिंक. चेकआउट लिंक भी होती है. इट कैन हैपन कि डिटेल्स में भी चेकआउट लिस्ट हो. जब आप डिटेल चेक कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट से ही वहाँ से परचेज कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी. ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट में भी आपका फीडबैक हो. तो कुछ इस तरीके से ना ऐप को डिज़ाइन करते हैं और कुछ इस तरीके से लेयर बाय लेयर उसकी फ्रेमिंग करते हैं. ये चीज़ क्लियर है. ओके, सो बेसिकली यही फॉर एन ई कॉमर्स साइट दिस इज हाउ द कंपोनेंट लुक्स. ठीक है, द कंपोनेंट कैन बी either class component or functional component in case of React app. This is first part. Second part is we already know that. Sorry, guys, I'm audible, right? Hello. Yes, yes. Okay. ठीक है, so the second part is कि एक तो ये पॉइंट है. The second part is in a React application data flows टॉप टू डाउन. ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो करता है.
ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो करता है ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन विच इज मेड बाय रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट की हेल्प से मैंने ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया। डेटा जो फ्लो होता है इट इज ऑलवेज फ्लोइंग डाउन एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में डेटा नीचे फ्लो होता है। तो दिस डिटेल कैन शेयर डेटा विद चेकआउट एंड प्रोडक्ट लिस्ट कैन शेयर। तो प्रोडक्ट पे जो लिस्ट होगा, जो बेसिक डेटा डिटेल्स पेज पे जाएगा, और उसकी हेल्प से आप चेकआउट पे आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ द डेटा इज फ्लोइंग मोस्ट ऑफ द टाइम। दिस इज फाइन। अगर पेरेंट से चाइल्ड को डेटा भेजना है तो ये तो ठीक है, ये तो चल रहा है। द इशू अराइजेज द इशू अराइजेज फॉर दिस पर्टिकुलर चेकआउट। इस चेकआउट के लिए मुझे फीडबैक देना है, ठीक है, मुझे फीडबैक देना है। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेट्स से द चेकआउट इज फेलिंग और मे बी कूपन कोड इज नॉट अप्लाइड और समथिंग समथिंग, तो आप फीडबैक भी दे सकते हो। बट इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हमने डिजाइन करा है, उसमें कंपोनेंट ट्री में यहाँ पे है फीडबैक और यहाँ पे चेकआउट। तो डेटा कैसे पास होगा? और मैं कह रहा हूँ कि डेटा ऑलवेज फ्लोज टॉप टू डाउन, हमेशा टॉप टू डाउन डेटा फ्लो होता है, पेरेंट टू चाइल्ड। तो सिबलिंग्स में तो डेटा फ्लो नहीं हो सकता, ये तो एक पॉइंट है, दिस इज प्रीटी श्योर। तो मुझे डेटा डी भेजना है, लेट्स से D1 डेटा मुझे फीडबैक को भेजना है। तो अगर इसके पास डेटा है तो मैं तो यहाँ नहीं भेज पाऊंगा। सो व्हाट इज द आइडिया? क्या क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू शेयर द डेटा, चेकआउट डेटा फीडबैक के साथ क्या कर सकते हैं? जैसे कि इसने स्टेट बनाई है और इसको यहाँ डेटा भेजना है, क्या कर सकते हैं? अच्छा, कैन वी से दैट कि इसको स्टेट बनाने की जगह D1 को, अगर मैं पेरेंट ऐप का स्टेट बना दूँ D1 को, तो ये D1 इसको भी शेयर्ड होगा और इसको भी। सो D1 स्टेट यहाँ रखने की जगह मैं पेरेंट पे रख दूँ, कॉमन पेरेंट पे, तो दोनों शेयर कर सकते हैं डेटा को। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही, वी कैन डू दिस। बट देर इज अ प्रॉब्लम। बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, राइट? वी कैनॉट कीप ऑल द डेटा एट दिस पॉइंट। अगर मैं यही करने चला जाऊँ, इसकी स्टेट फिर इसकी स्टेट, जितने कंपोनेंट्स है सब मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो तो नहीं कर सकता। दैट इज नॉट अ गुड थिंग वी कैन डू। सो what we do exactly is, what we do is we try to we try to have something called, this is first solution, और इस solution को लिफ्टिंग स्टेट अप बोलते हैं, ठीक है। लिफ्टिंग द स्टेट अप, जैसे हमने स्टेट को ऊपर उठा दिया, पेरेंट को दे दिया, तो लिफ्टिंग द स्टेट अप, एक तो ये उपाय है। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन सॉल्यूशन, देखेंगे। थर्ड इज we have the most optimized thing, we call it redux, ठीक है, redux state management app, state management tool, redux। how this works, redux कैसे हेल्प करेगा? so before we move to redux, let's see some code। all right, let me open this। let's see, we have some components in this or not. So we have source and this, okay, okay, this will do the job, ठीक है। So let's say we talk about this application, yeah, so this is an application which we'll be talking about, yeah। Now what exactly will be happening is, this is our main application जिसके अंदर state है, okay, let me run the application and then
it. So I will do npm start and remember the movies API, which we movies application, which we made last day. Yeah, something something, and basically there was a favorite component. So if we try to add two favorites, so there was we can add the movie to favorite. Okay, so this is something which was happening, right? So here is a state management. Okay, here we are passing props, but we are managing state here also. If you see. If we did using React hooks, remember React hook use state hook we used last time. ठीक है, we said that कि function में state तो नहीं हो सकता, but we have something addition which we call as hooks, React hooks. ठीक है, so okay, these two are empty anyways. So the point was कि instead of having make like states with a component, we can create a store. How do we create a store? Let's see. आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर. ठीक है कि डेटा सिबलिंग से शेयर नहीं कर सकते एंड लिफ्टिंग द स्टेट अप इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन. ठीक है, तो फिर एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट हो जहाँ पे सारे स्टेट हो. कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ एक ट्रूथ ऑफ सोर्स हो कि ये पूरे एप्लीकेशन की स्टेट है और ये यहाँ पे रहेगी. तो ऐसा कुछ अगर कर सकते हैं देन इट विल बी गुड. That is why we will study redux and all the implementation, all the like good implementation of react have redux with them. Okay, because everyone is using redux now. So and it also like it is very useful. Okay, so let's see this. Now redux is comprised of these four important things. Okay, first is we'll talk about store. Okay, तो सबसे पहला है store. ठीक है, store. Store is a place where you have your initial state. ठीक है, initial state will code in 5 to 10 minutes. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. तो store is a state. A store is a file which is basically holding your initial state. Initial state कैसा होता है? This is the initial state, right? जो भी मूवीज की पे कॉल में कर रहा हूँ इट इज एडेड टू मूवीज लिस्ट एंड इट वॉज प्रीवियसली एम्प्टी. तो इनिशियल स्टेट मुझे हर कंपोनेंट में मेंटेन करता है एंड दैट आई विल मूव टू स्टोर. ठीक है, स्टोर होगा जो कि इनिशियल स्टेट को कंटेन करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज ओके विल टॉक अबाउट दिस. नेक्स्ट पॉइंट इज व्यू. ठीक है, जैसा स्टोर होगा. ठीक है, जैसा स्टोर होगा सो बेसिकली स्टोर जो है व्यू को स्टेट प्रोवाइड करेगा और ये अपने कंपोनेंट में उस स्टेट को दिखाएगा. ऑब्वियसली ऐसे ही होता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. नाउ इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट, अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आपको किसी स्टेट को चेंज करना हो तो किसी ना किसी यूजर एक्टिविटी पे होता है. यूजर एक्टिविटी मतलब कि यूजर ने कुछ या तो क्लिक किया या तो स्क्रॉल किया, अदरवाइज लाइक पेज विजिट की समथिंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूँ तो आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन सेट मूवी एज फेवरेट ऑन क्लिक. ठीक है, मैं क्लिक पे कॉल कर रहा हूँ और अगर मैं इस फंक्शन पे जाऊँ तो यहाँ सेट स्टेट हो रहा है. तो स्टेट चेंज जो है वो हमेशा व्यू पे होगा. ठीक है, वो हमेशा व्यू पे होता है कोई एक्शन एक्शन लेने पे. ठीक है, कोई एक्शन लेने पे, एक्शन मतलब कि फंक्शन रन करने पे ये काम होता है. तो बेसिकली देयर विल बी अ फाइल जहाँ पे सारे फंक्शन अलग से बने होंगे. वी डू नॉट नीड टू हैव इन सेपरेट फाइल. जैसे ये जो सारे फंक्शंस आप देख रहे हो हर कंपोनेंट के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, ये नहीं रखेंगे. ठीक है, अलग अलग हैंडलर्स नहीं रखेंगे, एक कॉमन फाइल बनाएंगे जहाँ पे इसको रखेंगे. ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि लाइक लेट से 10 11 ढेर सारे एक्शंस हो सकते हैं. ठीक है, जो भी एक्शंस होगा बेस्ड ऑन वॉट एवर क्लिक इज गोइंग ऑन. इसके बेसिस पे इसके बेसिस पे हम रिड्यूसर्स लिखते हैं. ठीक है, रिड्यूसर्स आर समथिंग लाइक कंडीशनल ब्लॉक्स. या तो स्विच केस होगा नहीं तो इफ एल्स होगा. ठीक है, बेस्ड ऑन कि कौन सा एक्शन हुआ इट विल एवरी टाइम रिटर्न अ न्यू स्टेट. ठीक है, ये हर बार एक नया स्टेट रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन एक्शन. जैसे कि अगर एक्शन है सेट हेडिंग तो एक नया हेडिंग स्टेट में रिटर्न होगा. या फिर एक्शन इज सेट मूवीज एज फेवरेट तो फिर एक नया फेवरेट लिस्ट आपको रिटर्न करेगा ये रिड्यूसर.
तो reducer is just if else block which will be returning as the store. So this is the complete flow of redux. ठीक है, एक स्टोर होगा जहां सारा स्टेट होगा, वी कॉल इट कॉमन, लाइक सोर्स ऑफ ट्रुथ बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि सारा स्टेट वही होता है, तो वॉट एवर बी द स्टेट स्टोर्ड, वही हमारे एप्लीकेशन का स्टेट होगा। फिर वो स्टोर की हेल्प से व्यू बनता है, स्टेट की हेल्प से व्यू बनता है ऑब्वियसली। फिर व्यू को अगर हमें स्टेट में चेंज करना है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें कुछ फंक्शंस कॉल करनी पड़ेंगी। सेम केस यहाँ भी था, सेट स्टेट था तो हम डायरेक्टली थोड़ी चेंज कर देते, वी यूज टू चेंज इट विद सेट स्टेट मेथड। और फाइनली कुछ कंडीशनल ब्लॉक्स लगे होंगे जिनकी हेल्प से नया स्टेट रिटर्न करेंगे स्टोर में, और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक अपना एप्लीकेशन चलेगा। तो व्यू जो है वो सब्सक्राइब करता है रियल टाइम डेटा के लिए, जैसे ही स्टोर में अपडेट होगा तुरंत व्यू अपडेट होगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। हाउ डू यू सब्सक्राइब, देखेंगे उसको। व्यू जो है एक्शन को डिस्पैच करता है, यानी कि ट्रिगर करता है एक्शन को, तो वी कॉल इट डिस्पैच और सब्सक्राइब, ठीक है। एनीथिंग एल्स, नहीं। सो दिस इज द बेसिक फ्लो, ठीक है, ये एक बेसिक फ्लो है विच विल सी। एनी डाउट्स इन द बेसिक आइडिया, कैसे कोड करेंगे वो भी देखते हैं, बट बेसिक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। एंड वाई वी आर चूजिंग, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लेट से कल को अगर, बिकॉज सी द पॉइंट इज, अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर फेसबुक या फिर ये सब विजिट करोगे तो देर आर लॉट्स ऑफ कंपोनेंट। तो अभी तो ठीक है, दो कंपोनेंट है तो मैनेज हो जा रहा है कि अच्छा ये स्टेट है, इसको चार प्रॉप्स भेजने हैं, इसको एक प्रॉप भेजना है, अभी मैनेजेबल। बट यही अगर स्केल करने चले गए, 10-11 कंपोनेंट्स हो गए, तो फिर वही कंफ्यूज होते रह रहे हैं कि अच्छा ये यहाँ जा रहा है, फिर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा स्टेट सेट हो रहा है, कौन सा सेट नहीं हो रहा है, कब री रेंडर हुआ कंपोनेंट। तो ये सारी चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए हम स्टोर सेटअप करेंगे। तो ये काम कैसे होगा? तो ऑब्वियसली हमें फिर से कोड नहीं लिखना है, हमारे लिए ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज redux, you have something called as redux, है। ये कह रहा है कि अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्स। जावास्क्रिप्ट एप्स कोई भी हो सकता है, आपका नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस वाला हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, व्यू हो सकता है। ऑलरेडी नो अबाउट दिस राइट, सारे जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस के बारे में। ये रहे प्रिडिक्टेबल है, हाँ, मतलब कि आपको पता रहेगा कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी हो रहा है। तो Redux helps you write application that behave consistently, run in different environment, client server native, and are easy to test. Testing easy है थोड़ी, ठीक है, वो देख लेंगे हम। Centralizing your application state, एक central जगह पे रखेंगे, and logic enables powerful capabilities like undo, redo, state persistent, and much more. फिर डिबगेबल, डिबग कर सकते हैं, ठीक है, रिडक्स डेव टूल्स भी हैं, आप डिबग कर सकते हो। तो वी ऑलरेडी हैव दिस रिडक्स डेव टूल इंस्टॉल्ड, बट देखेंगे इसको। फिर फ्लेक्सिबल है, वर्क्स विद एनी यूआई लेयर एंड लार्ज इकोसिस्टम ऑफ एड ऑन्स, ठीक है, ठीक है। ये तो स्टोरी है सारी। इंस्टॉलेशन कैसे करनी है तो वी, अच्छा, सो टूल किट विल नॉट यूज टूल किट एज ऑफ नाउ, ठीक है, बाद में देखेंगे, नो नया एडिशन है, बट ठीक है, अभी के लिए npm इंस्टॉल से काम चलाता है। तो से npm इंस्टॉल redux, ठीक है, ये हो गई redux इंस्टॉल। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स में वी विल क्रिएट टू डिफरेंट फोल्डर्स। एक फोल्डर होगा रिड्यूसर्स, यहाँ पर रिड्यूसर्स, ओके, लेट मी चेंज द नेम, ठीक है। और एक फोल्डर होगा जिसमें होंगे एक्शंस। एक्शंस मतलब जो भी हम कॉल करेंगे फंक्शंस ही होंगे, दे विल चेंज द स्टेट बेस्ड ऑन आवर कॉल। और हमारे रिड्यूसर के पास भी एक इंडेक्स, सबको अलग अलग फोल्डर्स में रखते हैं सो दैट वी डू नॉट एंड अप एडिंग ऑल द फाइल्स इन द सेम प्लेस, अलग अलग रखेंगे उसको।
ओके, लेट्स डू द स्टोर सेटअप। ठीक है, स्टोर सेटअप करते हैं। तो हाउ डज अ स्टोर लुक? समथिंग लाइक दिस। एक इनिशियल स्टेट बनेंगे, एक इनिशियल स्टेट होगा। नाउ स्टेट इज नथिंग, जस्ट अ कॉमन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। बस यही होता है, और कोई ऐसा कुछ फैंसी चीज़ नहीं है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पहले भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कुछ खास नहीं है। स्टेट जो है हमारा वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही था। तो मैं पूरा ही कॉपी कर दूंगा बिकॉज हमें इसी की ज़रूरत है। तो एक रिड्यूसर बनाया, इनिशियल स्टेट उसमें ऑब्जेक्ट रखी और ऐसा कुछ कर दिया। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, हमारा इनिशियल स्टेट तैयार। नेक्स्ट एक फंक्शन बनेगी, एक्सपोर्ट विल से मेन रिड्यूसर। एक फंक्शन बनेगी, एक्सपोर्ट मेन रिड्यूसर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। हो गया? हाँ ठीक है, या फिर लास्ट में एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेन रिड्यूसर। रिड्यूसर को मिलता है हमेशा स्टेट, इनिशियली ये इनिशियल स्टेट होगा। रिड्यूसर को मिलता है हमेशा स्टेट, और इसको मिलता है एक्शन। दीज आर द टू थिंग्स। दैट्स इट, बस इतना ही था। ये हो गया हमारा रिड्यूसर, और ये हो गया हमारा। हाँ ठीक है, रिड्यूसर के अंदर स्विच केस होता है, तो कुछ इस तरह का केस होगा, विल सी इट। तो एक्शन डॉट टाइप और वट एवर वैल्यू इज दैट। तो यही है, बेस्ड ऑन एक्शन हम हर बार नया नया स्टेट रिटर्न करेंगे। कैसे रिटर्न करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, लेट्स सेटअप दी स्टोर। रिड्यूसर सेटअप हो गया, स्टोर सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। सो देयर इज अ फंक्शन क्रिएट स्टोर। ठीक है, क्रिएट स्टोर वी हैव हियर। ठीक है, there is a function create store. Also we need to import the main reducer. So let's create the store. Create a store method is brought to us by redux, जिसको चाहिए होता है reducer and anything else नहीं, और नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। So we already have this. Yes, ठीक है। So create a store has give like we have passed the reducer, और इसके अलावा अगर कोई मिडिल वेयर वगैरह हो तो वी कैन पास दैट, बट ठीक है, इट्स नॉट नीडेड एज ऑफ नाउ। नाउ सिंपली वी हैव दिस स्टोर सेटअप। सो स्टोर सेटअप हो गया, रिड्यूसर सेटअप हो गया। नाउ थर्ड थिंग वुड बी टू, यू कैन सी दैट क्रिएट स्टोरेज फ्रॉम रिडक्स, और कुछ इस तरह का स्टेट और एक्शन है, और यहाँ पे वी हैव द थिंग्स। नेक्स्ट थिंग इज हाउ डू वी सब्सक्राइब आवर एप्लीकेशन। ठीक है, अपनी एप्लीकेशंस को कैसे सब्सक्राइब कराएंगे, दैट इज द सेकंड वन। सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज, where do we get the provider? Let's see. Do we have the provider here? Okay, or maybe we also need to install. Now in order to connect our application, okay, in order to connect our application we need to wrap it with provider। ठीक है, प्रोवाइडर से रैप करना पड़ेगा इसको। सो दैट इज टू, दिस इज वी हैव ऑलरेडी डन। राइट, नेक्स्ट इज हाउ डू वी append it? Okay, will, okay, I need something which will just wrap it.
All right. Okay. I guess we need to install something else, which is React Redux also, and yeah, we need to install this also. Okay. So store setup is done, but in order to connect, we need to do this also. Okay. Now provider. So provider is by React Redux. What it says key, whatever state I have, I can just supply to our complete application. अपने पूरे application को supply कर सकते हैं. Okay. And that's it. So there is an argument store, okay, which requires a store over here. ठीक है, we supply store over here. Now provider is having a store, ठीक है, और store कहाँ से आ रहा है? Store is coming from reducer, और इस reducer के पास है सारा initial state. तो इससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन इज कि जितनी भी स्टेट हमने इस स्टोर में लिखी हैं, ठीक है, स्टोर है हमारे पास, एंड दिस स्टोर इज बिकमिंग द टॉप लेवल ऑफ आवर एप्लीकेशन. हमारे हमारा जो ऐप था, दिस इज द मेन रूट एप्लीकेशन, राइट? अब ये इसके भी टॉप पे इसको भी सर्कुलेट करा है, तो नाउ दिस हैज बिकम पेरेंट ऑफ माई एप्लीकेशन. तो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी, राइट? सो वी हैड अ प्रॉब्लम कि डेटा फ्लोज डाउन द एप्लीकेशन, तो हमने यहीं पे एक इस ऐप का भी एक और पेरेंट बना लिया. अगर मैं हम पेरेंट बना लेंगे तो हम सबसे डेटा शेयर कर पाएंगे. वही काम मैंने, इसीलिए मैंने ये चीज़ जो है वो इंडेक्स जेएस में सेट की, कहीं और सेट नहीं करा. ये चीज़ क्लियर हुई क्या? वाई डू वी हैव स्टोर देयर? क्लियर है अभी तक, और शुड आई रिपीट? नहीं सर, ठीक है। ओके, ठीक है. तो ये रही स्टोर सप्लाई करी हमने, एंड विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. तो रिड्यूसर हो गया, स्टोर हो गया, ये दो चीज़ें हो कर ली हमने, ठीक है. तो वी आर डन विद दिस स्टोर सेटअप और रिड्यूसर सेटअप. एक्शन सेटअप कर लेते हैं, और व्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो सब एक ही चीज़, एक ही लास्ट चीज़ बच गई है, दैट इज एक्शन. दैट्स इट, ठीक है. नाउ एक्शंस आर सिंपल प्योर फंक्शन, ठीक है, सिंपल प्योर फंक्शन. प्योर फंक्शन पता है ना? व्हाट आर प्योर फंक्शंस? यू गाइस नो अबाउट प्योर फंक्शंस? लेट्स सी. लेट्स से कि एक फंक्शन है, ठीक है. लेट फंक्शन वन बराबर ए कॉमा बी, नॉट प्लस ए कॉमा बी, एंड दिस रिटर्न्स ए प्लस बी. एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका काम है सम रिटर्न करना. तो इट सेज रिटर्न नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली रिटर्न की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. एक है फंक्शन वन, ठीक है. ऑल्सो वी हैव अ वेरिएबल सी जिसकी वैल्यू है 90, ठीक है. एक वेरिएबल है सी जिसकी वैल्यू है 90, एंड लेट फंक्शन टू, एक और फंक्शन है हमारे पास, इसकी है, जिसने तीनों ही रिटर्न करना, ठीक है. नाउ टेल मी, आप मुझे ये बताओ कि अगर ए और वैल्यू की, सॉरी, ए और बी की वैल्यू चेंज ना हो, लेट्स से अगर मैं 3 और 4 रखूं, तो क्या मुझे बार बार सेम आंसर मिलेगा? अगर मैं ए और बी की वैल्यू चेंज ना करूं तो मुझे बार बार सेम आंसर मिलेगा? फंक्शन टू के लिए, हाँ, फंक्शन वन के लिए भी सेम काम होगा. मैं अगर फंक्शन वन में 6,7 डालता हूँ, तो 6 और 7 के लिए क्या फंक्शन वन हमेशा 13 देगा? हाँ यस सर, obvious। देगा, राइट, ऑब्वियसली देगा. और क्या फंक्शन टू हमेशा 97 देगा अगर थ्री में 3 और 4 डालूँ तो?
एक बार फिर हाँ से मतलब। कर लेते हैं। सेम वैल्यू आ रही है राइट बार बार। हम्म, सो द पॉइंट हेयर इज कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गलती से C45 सेट हो गया, कब ये अब ये फंक्शन टू सेम आंसर देगा। हाँ नहीं मतलब वो तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो प्योर फंक्शन कौन सा है, इम्प्योर फंक्शन कौन सा है। हाँ, जिसके फंक्शन के वैल्यू दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो फंक्शन वन प्योर फंक्शन है और फंक्शन टू इम्प्योर फंक्शन है, क्लियर हुआ। हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि फंक्शन टू जो है वो किसी आउटर वेरिएबल पे डिपेंड करे। ठीक है, हो हम्म, सकता है नेटवर्क कॉल पे डिपेंड करे और नेटवर्क कॉल कभी सक्सेस होगी कभी फेलियर होगी, राइट। तो प्योर फंक्शन इम्प्योर फंक्शंस में ये डिफरेंस है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक्शंस जो होते हैं वो प्योर फंक्शंस होते हैं और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं और प्योर फंक्शन होता है, दैट्स इट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कुछ ऐसा फंक्शन लिखता हूँ कॉन्स्ट, इनिशियली हमें मूवीज की लिस्ट चाहिए, ठीक है, पूरी मूवीज की लिस्ट चाहिए राइट हमारे एप्लीकेशन में। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट दैट। ओके, इससे पहले एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ डमी स्टेट और उसको चेंज करके देखते हैं, ठीक है। सो बिफोर आई क्रिएट दिस मूवीज लिस्ट कॉन्स्ट सेट हेडिंग, ठीक है, हेडिंग है तो हेडिंग को सेट करके देखते हैं। तो सेट हेडिंग इज समथिंग एंड आई रिसीव अ न्यू हेडिंग ऑल इन ऑल, और ऑल्सो आई विल रिटर्न, ठीक है, आई विल रिटर्न दिस न्यू हेडिंग। सो टाइप रिटर्न करेंगे, क्यों रिटर्न करेंगे टाइप वो भी देखते हैं, ठीक है। एंड बिफोर आई रिटर्न अ टाइप, ठीक है, सो आई विल से कॉन्स्ट सेट अंडरस्कोर हेडिंग बराबर, एंड वी नीड टू पुट एक्सपोर्ट। Also in the data I will send the heading. So simple actions are simple functions, प्योर functions जो कि प्योर फंक्शन होते हैं जो कि सिर्फ सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं हमेशा। तो ये सेट हेडिंग फंक्शन है जिसमें जो कि एक नया हेडिंग रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, रिड्यूसर को। नाउ कमिंग हियर इफ आई सी दैट कि एक्शन डॉट टाइप जो है, ठीक है, अगर एक्शन डॉट टाइप की वैल्यू सेट हेडिंग के बराबर होती है, ठीक है, अगर सेट हेडिंग के बराबर होती है एक्शन डॉट टाइप, यू सी हियर यहाँ पे टाइप रिटर्न हो रहा है और डेटा रिटर्न हो रहा है। तो जब ये फंक्शन चलेगा तो टाइप और डेटा रिटर्न हो और डेटा में होगी हेडिंग। तो जब भी ऐसा कुछ हो, ठीक है, सो व्हाट विल बी रिटर्निंग एज, हम स्टेट को रिटर्न करेंगे, ठीक है, और हम रिटर्न करेंगे हेडिंग, और हम रिटर्न करेंगे हेडिंग, और इस हेडिंग में रिटर्न करेंगे हम डेटा डॉट, ओके, नॉट एक्शन डॉट डेटा डॉट हेडिंग, ठीक है, एक्शन डॉट डेटा डॉट हेडिंग, दिस इज व्हाट विल बी रिटर्न। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई चेंज नहीं होगा तो हम सीधा स्टेट रिटर्न कर देंगे जो हमारा करंट स्टेट है। तो एक्शन ने टाइप और डेटा रिटर्न किया और हमने यहाँ पे डेटा को टाइप की बेसिस पे हमने एक नया स्टेट रिटर्न कर दिया। दैट इज व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग
कि बेस्ड ऑन वॉट एवर, सो ये एक्शन चलेगा, एक्शन कोई स्टेट रिटर्न करेगा, इसको डेटा, कोई डेटा रिटर्न करेगा और टाइप रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन क्या डेटा इसको रिसीव हो रहा है और एक्शन की टाइप क्या है, ये एक नया स्टेट बना के भेजेगा स्टोर में। तो बेस्ड ऑन कि एक्शन का टाइप क्या है, ये एक नया जो रिड्यूसर एक नया स्टेट बना के स्टोर को भेजेगा, और स्टोर वही स्टेट ऐप को भेजेगा। वी आर ऑन द लास्ट स्टेज पे हैं। द पॉइंट इज कि हमें हेडिंग तो नहीं चाहिए, बट द पॉइंट इज कि हेडिंग आएगा कहाँ से। तो क्वेश्चन इज कि अब हेडिंग आएगा कहाँ से, हेडिंग तो है नहीं। तो द पॉइंट इज वी नीड टू सब्सक्राइब टू स्टोर। अब सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगी? सब्सक्रिप्शन मिलती है, देयर इज अ फंक्शन वी कॉल इट कनेक्ट। हमें कनेक्ट करना पड़ता है, यानी सब्सक्राइब करना करना पड़ता है स्टोर से। फॉर दैट वी हैव कनेक्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और हम अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे। सो आई विल से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कनेक्ट, और हम यहाँ पे कुछ सप्लाई करेंगे, और जिसकी सेकंड आर्गुमेंट जो होगी वो होगी हमारी एप्लीकेशन, और फर्स्ट आर्गुमेंट में कुछ सप्लाई करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू सप्लाई। सो बेसिकली हमें एक फंक्शन मिलती है, ठीक है, हमें एक फंक्शन लिखनी होती है जो कि हमारे लिए स्टेट रिटर्न करेगी, ठीक है, जो कि हमारे लिए स्टेट रिटर्न करती है। और हम यहाँ पे पास करेंगे ऐप स्टेट टू props. Now we have subscribed to the store, ठीक है, हमने स्टोर से सब्सक्राइब कर लिया। चल से मेन, और मेन में हमने स्टोर पास कर दिया। लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग, हमें क्या मिलता है। सो द बेस्ट वे टू चेक इज, लेट्स ऐड अ कंसोल ओवर हियर, ठीक है, कंसोल। ऑल राइट, console should be, we can use a console here, right? Okay, we cannot use it because it's a class component, तो ये किसी फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा हमें। So let's put it inside here. Now I will try to print the props dot main. Okay, props dot main. Let's put some line breaks so that you can identify this. All right, we have this, ठीक है, देखते हैं हमें क्या स्टेट रिटर्न हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज गुड। सो नाउ दिस इज द आर्गुमेंट। सो कनेक्ट, कनेक्ट जो है, ठीक है, सो इट सेज मैप स्टेट टू प्रॉप्स, और एक मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स होता है, बट ठीक है वो हमें नहीं देखना, हम खुद से करेंगे। विल सी हाउ वी आर डूइंग इट, बट ठीक है। सो इस कनेक्ट ने जो भी स्टेट जियो फंक्शन में पास किया, इसमें ये स्टेट फिल कर देगा, ठीक है, जो स्टेट इसको मिल रही होगी हमारे स्टोर से। और ये फंक्शन क्या करेगा, एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा, जो कि हमारे जितने भी स्टोर हैं वो इस ऐप को एज अ प्रॉप्स मिल जाएंगे। तो वही मैं प्रॉप्स प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी दिस प्रॉप्स, तो आपको यहाँ पे प्रॉप्स मिल जाएगी। तो प्रॉप्स डॉट मेन में हमारा स्टेट होना चाहिए। लेट्स सी दैट, दैट इज इट what we have. So it says props is not defined, this dot, okay, so it will be this dot props, right? All right, ठीक है। Okay, we have it over here, and before I restart, let's see if we have something in the console. So it says that an object is returned to us. Okay, now we see that we are having this in over here, right? The movie store, movies list, and this we are
गेटिंग इन props डॉट मेन, ठीक है, तो props डॉट मेन में मुझे मिल रहा है। इट मीन्स दैट कि मैं अब इस हेडिंग को यहाँ से हटा सकता हूँ। लेट्स डिलीट इट कम्प्लीटली, ठीक है। और हेडिंग जहाँ भी यूज हुई है, instead of doing this I will say this dot props dot main. Okay, one more thing for you guys. How many of you know about destructuring? Guys know about destructuring? Okay, so destructuring looking like something this. Let's say that this is an object and we want some property, कोई property चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो heading property इसके अंदर से इसमें store हो जाएगी, and instead of doing this big thing over here I can directly write a heading. Similarly हम state के साथ भी कर सकते हैं, तो I can write this dot state, और स्टेट में जितनी चीज़ें हैं आई कैन टेक इट आउट। सो फेवरेट्स, ठीक है, यहाँ पे निकाल सकते हैं, कॉमा मूवी लिस्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे दिस डॉट स्टेट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। दैट्स इट, आई ऑलरेडी हैव दिस, ठीक है। सो लेट्स सी दिस हेडिंग। ऑल राइट, सो आई हैव द हेडिंग, ठीक है, आई स्टिल हैव द हेडिंग। Now this heading can be changed. ठीक है, the point is, okay, so we are getting data in over here from the store. Is the setup clear? Setup clear हुआ? हाँ सर। फायदा ये है कि अब कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो उसको अलग अलग स्टोर देने की जगह, सॉरी, अलग अलग स्टेट देने की जगह सारे स्टेट को ही लिख देंगे, तो हमारे पास एक कॉमन प्लेस होगा, अपने पूरे एप्लीकेशन की स्टेट की जगह होगी। तो किस फंक्शन कॉल पे क्या स्टेट रिटर्न कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में होगा, इंस्टेड ऑफ कि घूम घूम के सारे फाइल में देखेंगे करके। क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है, तो हमने सबको उठा के यहीं पे रख दिया है, जितनी एप्लीकेशन जितने कंपोनेंट्स बनेंगे सबको उठा के यहीं पे रख रिड्यूसर के अंदर। सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज। ये तो हो गया, बट पॉइंट ये है कि अगर हेडिंग चेंज करनी होगी तो फिर हेडिंग चेंज कैसे करेंगे? ये सब तो ठीक है कि हाँ हाँ ठीक है, ये कर दिया, बट द पॉइंट इज कि फिर हेडिंग चेंज कैसे हुआ, क्योंकि प्रॉप्स जो है वो क्या होते हैं? कैन वी चेंज प्रॉप्स? नहीं सर, मतलब चाइल्ड को तो नहीं कर सकते पर उसका। यस, प्रॉप्स आर रीड ओनली, राइट। तो हम प्रॉप्स तो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, तो कैसे चेंज करेंगे? लेट्स सी नाउ। जब हम इसको स्टोर से कनेक्ट करते हैं ना, मैप स्टेट टू प्रॉप्स ऐसा कुछ करते हैं, तो वी गेट अ फंक्शन, हमें एक फंक्शन मिलती है जिसको हम बोलते हैं डिस्पैच। हमें एक फंक्शन मिलती है जिसको बोलते हैं डिस्पैच। डिस्पैच हमें एक फंक्शन मिलेगी, उसी की हेल्प से हम इस सेक्शन को कॉल करते हैं। कैसे कॉल करेंगे? लेट्स, इसको सिंपली रखते हैं, एक इनपुट एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं कि एक इनपुट एलिमेंट है, उसमें जो भी टाइप कर रहे हैं वो चेंज हो। बट ठीक है, एक बटन बनाते हैं और हार्ड कोड करते हैं इसको, ठीक है, कि इस बटन क्लिक पे ये हेडिंग हो जाएगी इसकी। आप इसको डायनामिक भी कर सकते हो यूज़र के उस पर, बट ठीक है। सेट हेडिंग, सेट हेडिंग एक फंक्शन है, ठीक है, विच विल चेंज दी हेडिंग, ठीक है। सेट हेडिंग इज अ फंक्शन जो कि हेडिंग को चेंज कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा? लेट्स से यू want to set the heading to new movie store, something like the movie store से new movie store करना चाहते हैं, something like this. I have a button, click to change heading, click to change heading, something like this. और ये set heading एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि हेडिंग रिसीव करेगा, और इसी की हेल्प से हम फंक्शन को डिस्पैच करेंगे।
have something called as this dot props dot dispatch. ये डिस्पैच है. डिस्पैच में हम कॉल कर सकते हैं सेट हेडिंग को. सेट हेडिंग बट फ्रॉम एक्शंस. लेट्स कॉल इट सेट हेडिंग कॉल बैक. इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. एंड वट एवर हेडिंग इज पास्ड हम यहाँ पे पास कर सकते हैं. सो अब हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमारे स्टोर को चेंज करेगा. ओके, सो वी हैव टू, सो वी कैन सी दिस इज बीइंग चेंज्ड. ठीक है. द होल पॉइंट इज कि हमने ये साइकिल कंप्लीट कर लिया. स्टार्टिंग विद व्यू. ठीक है, व्यू से स्टार्ट करते हैं. दिस इज आवर व्यू. व्यू इज डिस्पैचिंग एक्शन. एक कॉलबैक है, इस पर क्लिक करने पे हमने एक एक्शन डिस्पैच किया सेट हेडिंग नाम का. सेट हेडिंग एक नॉर्मल सा एक्शन प्योर फंक्शन है जिसका काम है ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करना. वही काम इसने किया. Now this object is returned to our reducer. reducer ने देखा कि एक्शन टाइप जो है वो सेट हेडिंग है. एक्शन टाइप जो है वो सेट हेडिंग है. इसके बेस पे इसने जो भी डेटा मिल रहा था उसके बेस पे इसने कुछ नया स्टेट रिटर्न किया. और ये नया स्टेट जो है हमने सप्लाई कर दिया अपने स्टोर को. और क्योंकि मेरा एप्लीकेशन जो है वो ऐप जो है हमारे स्टोर से सब्सक्राइब्ड है विद हेल्प ऑफ दिस कनेक्ट फंक्शन. ठीक है, जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट है हमारे एप्लीकेशन पे अप्लाइड है. तो हमें सारी एप्लीकेशन, सॉरी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मेन में मिल रही हैं. तो वट एवर स्टेट इज रिटर्न बाय स्टोर हमें मेन में मिल रही हैं. और इसको एज अ प्रॉपर्टी बना के हमने इस कंपोनेंट के अंदर भेज दिया. और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ हमें एक और फंक्शन भी मिलती है, उसका नाम है डिस्पैच. और इस डिस्पैच का इस्तेमाल करके हम एक्शन को डिस्पैच करते हैं. दिस इज हाउ द वी हैव कंप्लीटेड द साइकिल. हमने साइकिल को कंप्लीट कर दिया. क्लियर है ये? ओके. तो दिस इज फॉर वन थिंग. ठीक है, तो ये पार्ट हो गया. ऑब्वियसली हम हेडिंग चेंज करने के लिए redux नहीं बना रहे. विल सी हाउ कैन वी मेक दिस एपीआई कॉल. ठीक है, ये जो हमारा एपीआई कॉल है कॉम्पोनेंटेड अमाउंट में, इसको कैसे करेंगे? हाउ डू वी डू दिस? ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज, सिंस हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, सो आई कैन कॉपी दिस पार्ट. और मूवी लिस्ट भी हमने रिड्यूसर में यहाँ पे डाल ही दी है तो कोई इशू नहीं है. ठीक है, I can have an action for that also. So get a movie list is a function जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं. आई विल मेक द कॉल. ठीक है, मैं कॉल करूँगा एंड आई विल रिटर्न दिस मूवी लिस्ट. So we'll have get underscore movies underscore list. All right. Now इसके बेस पे I will return something, not type. I will return the type, so I'll say get movie list and will return data. और डेटा में हम रिटर्न कर देंगे मूवीज लिस्ट. ऑल राइट. ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ एरर्स. इट सेज अवेट बिकॉज इसको होना पड़ेगा ए सिंक. तभी ये वेट काम करेगा. एंड बेस्ड ऑन दिस गेट मूवीज लिस्ट वी नीड टू क्रिएट वन मोर reducer. So I will add one more case over here. Get movies list. ठीक है,
Now once store is set up तो चीज़ें आसान हो जाती हैं. You can just directly say something like this. बाकी जो स्टेट है वो ऐसे ही रह जाएगा. और जो मूवीज लिस्ट है, it will be something like, so we have named it movies list itself, right? Movies list. So I can say action dot data dot movies list. All right. Okay. This is what we have. Now, this function get movies list should be called, ठीक है, क्योंकि ये it should be done at this point only, तो हमें इसी point पे करना पड़ेगा. So we need to dispatch this dot props dot dispatch get movies list. Okay, get movies list. We'll call this. Also, एक तो ये हो गया. Now we do not need this movies list also. Okay, और इस favorites की जगह पर movies list is no more inside this, so I will remove it. And because we are getting movies list now from the store. Okay, make sense? ठीक है, क्योंकि अब मूवीज़ लिस्ट जो है वो हमें यहाँ से मिल रही है और यहाँ पे हमने मूवीज़ लिस्ट को भेजा हुआ है. दिस इज व्हाट इट इज. तो ये हो गया हमारा मूवीज़ लिस्ट का चीन डन. कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेट्स सी. देयर इज सम एरर. इट इज सेइंग दैट, लेट्स सी, एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट्स. बिल्कुल सही बात. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि एक्शंस जो हैं वो प्योर फंक्शन हैं और सिर्फ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं. The actual type was promise. You may need to add a middleware to your restore setup to handle dispatching other values, such as a redux thunk to handle dispatching function. कह रहा है कि एक्शन जो है वो प्लेन ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करते हैं. आप ये नहीं कर सकते, आप प्रॉमिस नहीं भेज सकते. एंड सही बात है, अभी हमने डिस्कस भी करा था कि भाई प्लेन ऑब्जेक्ट्स ही भेजता है. तब ये फंक्शन कहाँ से आ गया? ऊपर से एसिंक भी है, फिर प्रॉमिस भी है, ढेर सारी चीज़ें. तो फिर क्या करें? फॉर दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज थंक मिडलवेयर. We call it, and okay, so we install it using npm install a redux thunk. That's it, done. और अपने स्टोर में इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. we have a function apply middleware. ठीक है, अप्लाई मिडलवेयर एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम मिडलवेयर अप्लाई करते हैं. मिडलवेयर आई होप यू गाइस हैव ऑलरेडी known in we can say, ठीक है, you already know in from node.js. ठीक है, so you already know that this part. तो thunk is such kind of middleware which allows us to, ठीक है, which allows us to have नॉन प्लेन ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि हाँ, कैसे करेंगे दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन सिंपली डू समथिंग लाइक दिस. हम इसको एक फंक्शन में रैप कर सकते हैं. ठीक है, रैप इट इनसाइड अ फंक्शन, देन रिटर्न. सो आई कैन से रिटर्न async, और यहाँ पे मिलेगा dispatch, यहाँ पे मिलेगा get state, और हम इसको ऐसे कर सकते हैं. Now this is correct. So let's name it. I will call it
फेच मूवी लिस्ट, फेच मूवी लिस्ट, और एक नया कॉलबैक होगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट मूवीज लिस्ट, ठीक है, गेट मूवीज लिस्ट कुछ इस तरीके का बनेगा। All right, and it will return this. Okay, now I'm getting some data which I will be sending over. The data I want to send is basically I want to send this data. Give me a minute, please. So I can say dispatch, ठीक है, अब यहाँ पे भी dispatch अवेलेबल होगा हमारे पास, राइट? Now I can simply dispatch another action from here. Okay, so I can say get movies list. That is query data. Basically, that's it. So this is what we had. And finally, ये जो data है, it will be sent by this one in the form of movies list, comma whatever data I'm using. तो द प्योर फंक्शंस रिटर्न जस्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि एसिंक भी हो गया फिर फंक्शन कॉल भी कर दिया, तो प्योर तो बचा ही नहीं ना, तो फिर दैट इज व्हाई वी डू समथिंग लाइक दिस। इज इट फाइन नाउ? इट सेज कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड मूवी लिस्ट। सही बात है, देख लेते हैं व्हाट इज द इशू, आर वी गेटिंग दिस और नॉट, what are we getting in the data? Let's see that one first. Okay, so we are getting undefined in here, which is the reason. All right. Hmm. So why we are getting this? That should be working, right? We not need to return or something. Okay. So we have all things in place. Okay, got it. Issue is we need to call this fetch function instead of this fetch movies list. Okay. Now yes, it should be working.
All right. So we are calling this function in here, and return dispatch. Then we are calling it movies list, where we are supplying the data, and the data is being supplied here, and which is being received here. So is it not working still? All right, we are getting the data right. What's the issue then? We are getting the data. So what is the issue? So movies list we are having over here. Get movies list. Type is also correct. Is it not being returned from here or what? Movies list. Let's drop console here also. Okay. Action dot data dot movies list. Okay. All right. Let's take this one. Okay. Hmm. Okay. Got it. So we are not going at index line 13 and redax 91. Okay. So why is it not getting supplied here? Not able to print this. So get movies list should be working, which is not working. And why is that? What if we directly return this? Okay. Okay, so we are making the call, that is going, that is good, but I'm not able to get this straight. Calling this function and not able to get what it is. So dispatching, and this should be the thing which goes. All right. Okay.
Okay, let's try to directly call it once and let's check if that is working. So if I say return get movies list and supply the movies list. All right. Cannot read properties movies list. Main reducer. Cannot read properties movies list. All right. This is correct. This is also correct. Data is correct. Then we have this. Okay. All right. So we are supplying the data. So it should be data, not this. So action dot data. Okay. Action dot data. And we are supplying whatever data we are getting from here. So it should be just action dot data, not the movies list. Let's print this one just check it out. Okay, so we are getting this indeed, right? We do not need this one. Okay, so it's done now. Yeah, so shoes were with the names, but yeah, now it's fine. Okay, so this is what we have in reducers. Okay. So actions which do not which require any function call, we have to set up it something like this. So we need this dispatch thing whenever we make an action call, and we do it something like this. So similarly, we can move the movers of the favorite list function also here. So if we check our state now, the only thing is remaining as this favorite one. Rest, I guess we have already shifted it to redux store. Okay, so reducer is already here. If you want to use any of the thing, any of the state, we can put it here, and here is the reducer. So and any action you need based on that reducer, you can perform it over here. So any state change required. So this these functions will help us in order to change the state. So this is the complete Redux React setup for our React application. Okay, and here it is how it is working basically. Okay. Yeah, obviously, like we need to set up this also in order to work. But yeah, I hope you guys are getting the point. So is the Redux setup clear, all of you guys? Guys, any issues? Yes, sir. Okay. So this is what we have in React. Redux. One last thing we'll be discussing, and we will be wrapping up. Okay. And I will like advise you all guys to um, have a look at the documentation, okay, and like go through it. So that will be like one good way to do this, right? For the rest of the things which are remaining, also let's see this. So this is complete reduction React. Context API is a small thing. You can just go through it once. DOM we already know. Ref we can see. Routing we can see. Fetch API we already know this. React API reference. All the functions we have studied till now, you can find it over here. Okay. And we discuss about state hook last class. Okay. And we also deployed a React app. We also deployed our React app. Remember the deployment thing last day, guys? Yes, sir. You see this already deployed. Okay, so it's live in this URL. You can just go through it if you want.
Deployment we have already done. So things are remaining. It's mostly the routing part, and rest I guess are smaller things. Mostly covered. Okay, mostly we have covered all sort of things. Just one last thing, just routing in a React. Now, till now, all the functions, everything was running in the same URL. No change. Okay, no change. And this URL is coming from this. You see here, the home page we have written the same thing. Okay, so everything we do, there is no change in URL. But in the real life example, this does not happen. We have lots of URLs, right? Lots of pages are there, so we need to tackle that also. Before we go to this React route, I want to see one thing. Guys, you know about history API, browser history API? You see this back and forward button. How does the tab know which was the previous page? It must be stored somewhere, right? That then and only it knows key you have to go forward, you have to come backward, go forward, then go forward, something. So it must be stored somewhere, isn't it, guys? What do you guys think? These हाँ सर। back and forward button. So there is a stack maintained. एक stack है internal stack जिसमें सारी pages stored है. So this is the history API. It says the DOM window object provide access to browser session history, not to be confused with web extension. तो ठीक है, web extension history से हमें अभी मतलब नहीं है. We are already concerned about window dot history. Window dot history. ठीक है कि चार पेजेस हैं, ठीक है, तो बैक टू बैक ओपन है, और जैसे ही है मतलब, और ये सारे मेथड्स हैं इसके पास, बैक है, फॉरवर्ड है, तो यहाँ तो या तो आप यहाँ से बैक फॉरवर्ड करो या तो आप इस फंक्शन से करो, एक ही बात है। कैसे करेंगे, लेट्स सी। विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक, अगर मैं बैक दबाऊंगा तो मैं पीछे चलाऊंगा मेरे पेज, देखो देखो पीछे आ गया। आ, और बैक की जगह क्या है, फॉरवर्ड। हाँ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करता हूँ, आई एम कमिंग ऑन दी दिस पेज। कैसे क्लियर हो रहा है क्या फंक्शन, बैक और फॉरवर्ड? हाँ सर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे होता है कि मूविंग टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन हिस्ट्री, अगर आप बैक टू बैक नहीं जाना चाहते हो तो आप किसी पॉइंट पे जा सकते हो। किसी पॉइंट में मतलब कि अगर हिस्ट्री में होगा तो फिर जो इस वाले एरो में होगी वो -1 -2 -3, और जो इस वाले में एरो होगी वो 1 2 3 ऐसे होगी। और जहाँ पे आप खड़े होते हो वो होता है ज़ीरो। ठीक है, जहाँ पे आप खड़े होते हो वो बेसिकली ज़ीरो होता है। ठीक है, और जहाँ पे आप आगे पीछे जाना चाहते हो तो वो -1 1 होता है। ठीक है, कुछ ऐसा समझ लो। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप अलग से भी, अगर नहीं हो तो भी आप उसमें कुछ कर सकते हो, मतलब कि आप पुश स्टेट कर सकते हो, और हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट, तो आप टाइटल वन और पेज वन घुसा सकते हो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पेज वन, ठीक है, ये रहा पेज वन, आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब बैग आ गया तो यहाँ पे आ गया आप वापस, तो आप ज़बरदस्ती भी घुसा सकते हो उसमें, रेस्ट नहीं कहता। एंड द पॉइंट इज कि हम बिना रिफ्रेश किए काम कर पा रहे हैं। इफ यू ऑब्जर्व दिस, बिना रिफ्रेश के हम ये काम कर पा रहे हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, तो यही सिर्फ ओके, तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी चीज़ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ब्राउज़र की हिस्ट्री एपीआई का
यूज़ करता है और वो पूरी हिस्ट्री को मेंटेन करके रखता है। हिस्ट्री स्टैक होती है तो ज़ीरो -1 -2 फिर 1 2 वो सारी चीज़ें मेंटेन्ड होती हैं। तो इसके लिए भी एक पैकेज है। वी आर लकी कि हमारे पास एक और पैकेज है। ये है रिएक्ट राउटर। इंस्टॉलेशन बेसिक इंस्टॉलेशन कहते हैं तो सा कुछ करेंगे npm में कर लेते हैं बेसिक इंस्टॉलेशन। सो आई कैन से रिएक्ट राउटर dom@6। ऑल राइट। ये कह रहा है कि ब्राउज़र राउटर से अपने एप्लीकेशन को रैप कर दीजिए एंड रेस्ट यू कैन डायरेक्टली यूज राउट्स एंड राउट। कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं। दिस इज ऑलरेडी पैकेज। पैकेज का ही फायदा है, राइट? वी डू नॉट हैव टू डू मच ऑफ दी वर्क। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं ब्राउज़र राउटर। ऑलराइट, सेव कर दिया इसमें यहाँ पे। एंड वी नीड टू क्रिएट डिफरेंट पेजेस। हम अलग अलग पेजेस बनाना चाहते हैं। तो लेट मी क्रिएट 2 डमी पेजेस जिसका यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। तो एक मेन डॉट जैसे तो यहाँ पे एक स्टेटलेस फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, आई कैन से द मेन पेज। एक नैबर पे भी कर सकते हैं। एक डमी फंक्शन बना देते हैं, इस पे देते हैं दिस इज बार डमी पेजेस। ऑल राइट। कैसे राउटर को यूज़ करेंगे? तो ब्राउज़र राउटर से अपने आप को वो करेंगे, पहले रैप करेंगे। जितने भी राउट्स हमें बनाने हैं अपने लिए, ठीक है, वैलिड राउट्स जो भी हमें बनाने हैं अपने लिए, वी नीड टू रैप इट इनसाइड राउट्स, समथिंग लाइक दिस। और इस राउट के अंदर होगा राउट, इसमें होगी पाथ। तो लेट्स से कि हम एक नया पाथ बनाना चाहते हैं स्लैश में। और बेस्ड ऑन ईच पाथ, तो हर हर डिफरेंट यूआरएल पे हर डिफरेंट पेज खुलना चाहिए। बट पेज का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मल्टी पेज तो है नहीं। सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो फिर क्या करेंगे? पेज तो है नहीं, क्या करें? वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉम्पोनेंट। तो फिर पाथ के केस में हो गया, व्हाई इज इट नॉट फेचिंग अस राउट? राउट तो फेच कर लिया इसने। should fetch routes also, right? Ah, yes, obviously. We have the routes and we have this. Then we have the path. Okay. And based on this path, we have to show some element. तो हम element हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो this is the element we call it main, जो dummy element है हमारा। एक और path बना सकते हैं। इसमें हम रख सकते हैं nav bar। और इसमें हम बना सकते हैं nav bar। ऑल राइट। ये हुए राउट्स बन गए हैं, ठीक है। अब ये राउट्स बन चुके हैं। नाउ इन ऑर्डर टू विजिट दीज राउट्स, ठीक है, एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं आया होगा, राउट बने हैं। ये हमें कैसे विजिट करना है वो भी देखना है। तो एप्लीकेशन पहले जैसी ही दिख रही है, ठीक है, बट इसको कैसे विजिट करेंगे वो भी देखते हैं। ऑल्सो इन द मेन आई विल हैव राउट्स इन मेन ऑल्सो, ताकि हम वापस आ सकें। सो कॉपी
Hope it does not give error. Okay, it is giving error. So we need to have routes. ठीक है, route चाहिए हमें, and we need a route, and we do not need the number two. All right, it's done. How do we visit this thing? Let's see. Okay, let me cut this. We do not need it here. Sorry, and put it here itself. How do we visit it? We have something called as link tag. Link tag, right? All right, and what we say? HF? No, HF we do not have. Link to, right? Sorry, it's to itself, right? Okay, let's go through the documentation. So it would be better if we just have a confirmation through the document. Okay, it's two only, so we are going correct. So it's two, and I can say slash main. Okay, I can say slash main, and I can write main page. Similarly, I can save this one, and let's comment over here, and I can simply say slash home. Okay, so I can mark it page. Also, since in order to import link, I need to import link. As home is this one, so that's it. So we'll probably be having this links with us. Yeah, we have it. So we can go to the main page. You see this main slash main over here. Okay, and I can come to home page again, which is not so good looking. And why is that? It says this dot pro dot main is cannot destructure property heading of this dot main as it is undefined. All right. Okay. This is because we are not directly sharing things over there. This is because Redux cannot share the data. Okay, nothing else. We can connect other part as to Redux also, but yeah, it is fine for now. So we can simply say slash home. We can all right. I know what's the problem with that. So this is navbar. We can just go to the main page. All right, with 3000. So this is a router, React router. So basically we define this route and we visit using this link. Link dissolves to anchor tag. Anchor tag kai form a link. Yeah, so this is what we have. Some important things are you guys need to look at it as context API and refs. Okay? But I would highly recommend that please go through the documentation. Okay? Please go through it. It is very easy. Nothing else. Like lots of things which were we needed to discuss, we have already discussed. And if you feel that something is missing, we can have a discussion on it. But I guess it's all good. Okay, these all things we have tried to cover up. Have a look at it. Thank you so much, guys. This was all from my end. I hope you had a great time, and we'll be having sessions maybe. Like if you get stuck somewhere, you can just reach out. Yeah. And today it is, what's the day today? Today is
सर हमारे रिजेक्ट के जो स्किल टेस्ट है वहाँ पे प्रोजेक्ट कौन सा है? क्या भाई? स्किल टेस्ट का प्रोजेक्ट कौन सा है रिएक्ट में? स्किल टेस्ट का प्रोजेक्ट भाई, स्किल टेस्ट के प्रोजेक्ट्स मतलब इसी से रिलेटेड है कुछ। मुझे लग रहा है कि एक टेबल बनाने आया था बेस्ड ऑन एपीआई कॉल, और मतलब वही है एपीआई से रिलेटेड जिसमें लाइफ साइकिल मेथड यूज़ होंगे, और आपको उस पर प्रॉप्स वगैरह चलानी होंगी, फिर एक यही है यूआई डिज़ाइन करनी होगी, तो इन्हीं सब से रिलेटेड है। मतलब लाइक वॉट एवर वी नीड इज़ ऑलरेडी लाइक कह सकते हैं कि हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर ली हैं ऑलरेडी। ठीक है, so उन्हीं का यूज़ करके आएगा। तो let's go through it once, or before going please mark your attendance. I'm sharing the sheet. ठीक है, sheet share कर दिया मैंने। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।